is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. सारे वैल्यूज पर सब्स्टिट्यूट करो. चलो वेरी गुड तेजल. So this will become 0.22. This is option C is the answer. चलो नेक्स्ट सम में आओ. अब नेक्स्ट सम जो है ना मैडम, ऐसा सम है जो हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, बट उसको मैं तुम लोग को बड़ा ऑल्टरनेटिवली दूसरे मेथड से बड़ा सॉल्व करके बताऊंगा. सम नंबर 13 बड़ा जो सॉल्व हो चुका है. चलो एक बार क्वेश्चन बड़ा गो थ्रू करो. चलो रेडी. ये देखो 13 सम क्या है. A bag contains 12 balls which are numbered from 1 to 12. If a ball is selected, what is the probability that the number of the ball will be a multiple of 5 or 6 or 6? बड़ा बीच में कौन सा बड़ा आया? और बड़ा. एंड हमें पता है कि सब में बड़ा ये वर्ड और का आना इस बात का बड़ा संकेत है कि द गिवन सम इट मे बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग एडिशन थ्योरम. बट अभी तक बड़ा ये कंफर्म नहीं हुआ है कि एडिशन थ्योरम यूज होगा या नहीं. सेकेंड कंडीशन चेक करो बड़ा. 1 to 12 में क्या तुम्हारे पास बड़ा ऐसा कोई नंबर है जो 5 का भी मल्टीपल है एज वेल एज बड़ा वो 6 का भी मल्टीपल है? इसका मतलब बड़ा और तो है, बट उसमें बड़ा कोई भी चीज कॉमन नहीं है. का मतलब ये हुआ बड़ा कि ये एग्जांपल में जो दो इवेंट्स है बड़ा ए एंड बी, दे आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बड़ा. तो ये सम सॉल्व होगा बड़ा बट बाय यूजिंग द कोरोलरी. ये देख मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा. द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 12 नंबर्ड फ्रॉम मैडम 1 to 12. Therefore, the number of ways in which a ball can be selected is 12C1, that is n of s. Answer is equal to 12. Next. Let A be the event of getting a number
विच इज अ मल्टीपल ऑफ बड़ा 5। चलो बड़ा 5 के मल्टीपल्स कौन कौन आएंगे? 1 to 12 में इट विल बी 5 and 10। बट मुझे तो बड़ा 2 में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम इंटरेस्टेड बड़ा ओनली इन 1। एन ऑफ ए बड़ा इट विल बी इक्वल टू 2c1। एन ऑफ ए बड़ा इट विल बी इक्वल टू 2। So in that case, probability of A which is equal to n of A upon n of S. A of A answer is equal to 2 by 12. So next, मुझे बताओ, let B be the event of getting a number multiple of 6. तो बड़ा 6 के मल्टीपल्स कौन कौन हो गए मुझे बताओ? 6 and 12. But are we interested beta into? No, we are interested but only in so what is n of B is equal to? Probability of B will be equal to n of B upon n of S. Therefore, probability of B answer will be 2 by 12. So ये देखो, by using the first corollary rule, we can say that P of A union B is equal to P of A plus P of B. Value substitute कर दे 2 by 12 plus 2 by 12 4 by 12 आंसर इज 1 by 12। चेक कर बड़ा, ये आंसर तो नहीं था तुम लोग का? चेक कर गई तुम लोग का बड़ा, ये आंसर तो नहीं था? कोई भी मेथड यूज कर पड़ा, कोई भी का मतलब कोई भी आंसर विल कम वन और द सेम। ये तो बड़ा तुम लोग को जिंदगी में कभी अफसोस नहीं रहना चाहिए कि सर ने कभी पढ़ाया नहीं हम लोग को, इसलिए मैंने बता दिया तुम लोग को, समझा सको। चलो बड़ा, all the important sums with respect to बड़ा एडिशन थ्योरम इट गेट्स ओवर। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग बड़ा स्टॉप करके दूसरा स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ।
So we are starting with the new concept, which is called to be as conditional probability. Conditional probability. चलो ready हो सब लोग? So when we are going to start with this new concept, which is being called to be as a conditional probability, दिमाग जो है कहीं ना कहीं सोचता तो है ही सर व्हाट इज दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अंडर व्हाट सिचुएशन दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी occurs. एक मिनट, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना तुम लोग को? तुम्हें बड़ा अपने नोट्स में भी मिलेगा सब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो दिमाग बड़ा कहीं ना कहीं सोचता तो है ही सब, सर व्हाट इज दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, under what situation this conditional probability it occurs, what we do in the conditional probability, and like that, etc., etc. There are many of the doubts, there are many of the questions which comes in our mind, right? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है बेटा तुम लोग को? तब ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि अंडर व्हाट सिचुएशन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इट एग्जिस्ट. So answer to that question is कि conditional probability it exists only between the two dependent events. I repeat, it exists between the two dependent events. Dependent event. So, but when I'm using the word dependent event, so again in that case, what everyone should know, sir, what is the meaning of the term dependent? So, what a dependent means when the occurring or non-occurring, when occurring or non-occurring of the one event, if it affects the occurring or non-occurring of the other event, then we say that the two events are dependent events. Or in other words, when I'm saying that when the outcome of one event, when it affects the outcome of other event, the outcome of one event, when it affects the outcome of other event, then we say that the two events are dependent events. And in a conditional probability, we always try to find the probability of the one event, the probability of one event, the probability of the one event when already the other event has taken place. When already
पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। The other event has taken place. So here in such type of situations, suppose A and B are the two events, out of which A is the event which is already it has been occurred. And after knowing that okay, A is the event which is already occurred, we want to find the probability of B. So that probability it is been denoted by it is been denoted by probability of B under A. बट कोई भी स्टूडेंट उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ए रीड नहीं करेगा. इट विल बी रीड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर ए. हाउ इट विल बी रीड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर ए. That means you are finding the probability of event B when already event A has taken place. Already event A has taken place. And even it can be a vice versa also. Vice versa. Acha, vice versa means what? Is suppose if A and B are the two events and B is the event which is already occurred. B is the event which is already occurred. So how we will represent the probability of A? Probability of A कैसे represent करोगे? It will be denoted by probability of A under B. Acha, what is the meaning of the term probability of A under B? You are finding the probability of event A in which already event B has taken place. इसका मतलब बेटा ए एंड बी में से चलो मुझे बताओ बेटा कि कौन सा इवेंट पहले अगर हो चुका है. Correct. And by knowing that बेटा कि B is the event which is already occurred, what is your aim is to find the probability of event A. And now there comes the question mark. There comes a question mark. There comes a doubt. Yes, sir, while solving with the sums, how we will identify which sum is based upon a conditional probability? ये आंसर तुम लोग बड़ा कैसे मुझे दे पाओगे? तो उसको आंसर देने के लिए तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले बड़ा
उसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स बड़ा समझने होंगे। कार्ड इज ड्रॉन, a card is drawn from a well shuffled pack, and after drawing a card, again, the card is not replaced, it is been kept aside. Card is kept aside, उसको फिर से 52 प्लेइंग कार्ड्स में बड़ा उसे रिप्लेस नहीं किया है बड़ा। Card is kept aside, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सबको? And after keeping the first card aside, the second card is selected. And now the question is, if we want to find the probability in which both the cards which are been selected, they are the red cards. Both the cards which are been selected, they are the red cards. तो तुम लोग यहाँ पे सोचोगे कि सर ये एग्जाम्पल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कैसे हुआ? It is so simple. In this given example, the outcome of one event, it has affected the outcome of other event. अब तुम लोग पूछोगे सर कैसे? ये देखो बेटा यहाँ पे when the first card, when it was selected out of, चलो जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दो। First card when it was been selected, it was selected out of 52 cards. इसका मतलब पड़ा the number of ways in which the first card can be selected is 52C1. इसका मतलब ये हुआ बड़ा कि यहाँ पे n of s बड़ा it will be equal to 52, बराबर है। अब मुझे बताओ बेटा टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स क्या होते हैं? ट्वेंटी सिक्स। तो नंबर ऑफ वेज इन विच बड़ा फर्स्ट रेड कार्ड कैन बी सिलेक्टेड इज, (26C1). ये देख, इसका मतलब बड़ा n ऑफ ए विल बी इक्वल टू 26 हो जाएगा। इसका मतलब बड़ा प्रोबेबिलिटी of getting the first red card will be 26 upon 52, right? अब मुझे ये बता फर्स्ट कार्ड सिलेक्ट करने के बाद क्या मैंने उसे रिप्लेस किया? नहीं है कि नहीं, मैंने उसे क्या कर दिया बड़ा साइड में रख दिया। तब मुझे पता है कि एक इवेंट बड़ा ऑलरेडी अकर हो चुका है, राइट? तो सेकेंड कार्ड जो है वो अब कितने में से सिलेक्ट होगा? वेरी गुड। नंबर ऑफ वेज इन विच द सेकेंड कार्ड कैन बी सिलेक्टेड बट इट विल बी 51C1। तो उसका आंसर आएगा 51। टोटल नंबर ऑफ बेटा रेड कार्ड्स होते हैं 26। भाई एक तो ऑलरेडी सिलेक्ट होके बाहर निकल चुका है, अब बचे कितने हैं? तो नंबर ऑफ वेज बेटा इन विच the second card but red card will be selected will be 25C1, which is equal to 25।
तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 25/51 होगा। भाई ये देख ले, पहले का प्रोबेबिलिटी कितना था? 26/52। और दूसरे का क्या मिला बड़ा? 25/51। देखा तुम लोग ने बड़ा? द आउटकम ऑफ वन has affected but the outcome of other. Therefore, it is an example of conditional probability by. समझ में आ रहा है तुम लोग को सबको? The outcome of one, it has affected the outcome of other. Therefore, it is an example of conditional probability. चल बड़ा और एक एग्जांपल दे कि there are 20 लॉटरी टिकट्स। कितने लॉटरी टिकट्स हैं? 20, which are numbered from 1 to 20. A ticket is selected. A ticket, it is been selected and it is being kept aside. And after keeping the first ticket aside, the second lottery ticket is selected. Find the probability in which both the ticket bears an even number. Bears an even number. चलो अब बताओ, ये जो एग्जांपल है बड़ा, ये एग्जांपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल क्यों है बताओ? Because in this given example, the outcome of one event is going to affect the outcome of other event. Outcome of one event will affect the outcome of other event. बड़ा जब फर्स्ट लॉटरी टिकट सिलेक्ट हुआ, फर्स्ट लॉटरी टिकट वो कितने में से सिलेक्ट हुआ? 20 में से। तो नंबर ऑफ पेज बड़ा इट वुड बी 20C1। 20C1 बड़ा इट विल रिप्रेजेंट द आंसर ऑफ n of s. नेक्स्ट लेट a be the event बड़ा in which the first ticket बड़ा bears an even number. बड़ा इवन नंबर कौन कौन आएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे 10 टिकट आएंगे बड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट टिकट bears an even number, it will be 10/20. बट जब बड़ा सेकेंड टिकट सिलेक्ट हुआ, सेकेंड टिकट, तो बड़ा सेकेंड टिकट कितने में से सिलेक्ट हुआ? 19 में से, बराबर। तो उसका नंबर ऑफ वेज जो होगा वो 19C1 यानी 19 होगा। पहले का 20 में से सिलेक्शन, दूसरे का 19 में से। बड़ा आउटकम ऑफ वन इट हैज अफेक्टेड द आउटकम ऑफ अदर। बड़ा टोटल तो तुम्हारे पास ऐसे 10 टिकट्स थे, बट 10 में से बड़ा एक तो चला गया। अब बाकी बचे थे बड़ा कितने? 9 टिकट छोड़ो। तब इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड टिकट का जो प्रोबेबिलिटी होगा बड़ा, वो क्या होगा? सेकेंड टिकट का प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी भाई दिवांशु डायरेक्ट आंसर बोलना है। प्रोबेबिलिटी इट विल बी 9/19। 20 कहां से आया भाई? सेकेंड टिकट तो बड़ा 19 में से सिलेक्ट हुआ ना।
देखा तुम लोग ने बड़ा, आउटकम ऑफ वन इवेंट it has affected but the outcome of other event, therefore it is an example of conditional probability। भाई लोग तुम लोग ने ये दो एग्जांपल्स देखे हो, बताओ ये दो एग्जांपल में तुम लोग ने कॉमन क्या देखा? जिससे तुम लोग को पता चला कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।